Hello dear student, good evening all of you. This is VM sir from the BIM class. Today I am going to discuss in this live sessions in this live class that regarding the tense revision. Dear student, in this class especially we are going to discuss the tense pattern. Tense pattern is one of the most important topics for the first year, second year, arts, science, commerce and the vocational. By the way, this is Assistant Professor Bishnu lecture in English, Pirabati Women's Higher Secondary Schools, and the faculty of the Sri Education Science College, Tujung Teresinga, Dist-Kalahandi. Okay, dear friends, especially in this live session, we are going to discuss the tense revision or the tense pattern, chapter 2. Especially, we are going to discuss the tense. What is the topic? Tense revision or the tense pattern. Okay, the dear student, tense is one of the most important topics. Tense is one of the salt like in the curry, and without the tense, without the proper form of tense, without the proper form of tense, proper pattern, we can't write English. We cannot write English. We cannot speak English properly, and that means cannot speak and write English accurately. Okay, uh, some of the students they don't give importance to this topics, and they just read prose and poetry and other writing sections without knowing the proper form of tense, without proper knowing the proper patterns of tense. It is one of the most important topics that's that's improve the writing and speaking skill of a persons. Without knowing the proper tense, without knowing the proper form of tense, without knowing the proper everything, the students they think that they think that we are writing good in English, we are speak good in English, we are doing good in English. It is not good. It is according to the grammar, it is not good. It is okay. Just I want to zoom it for the student. Those are unable to see these topics properly. Okay. In this live session, especially, we are going to discuss the chapter 2, tense pattern, or the unit 1. Tense pattern is one of the most important topics, and these topics play an important role in the teaching and learning and writing in English. Most of the students, most of the people, they think that tense is not important, but it is very important. Those are thinking that it's not good or not important. That is very bad. It is one of the most important topics. By the way, by these topics, by this tense can play an important role in the English. Without knowing the proper form of English, without knowing the proper patterns of English, the English is tasteless, and grammatically is not meaningless, because it is the most important topics. And by these topics, one a person can write, can speak English properly. Okay, in this live session, dear students, especially we are going to discuss the tense and time in English. Some of the persons have some wrong idea that tense uh, can't play the important role in the English, but it is not good. It is one of the most important. It is one of the most important in English, because it is the mother of
the English. Tense is the mother of the English, and grammar is the father of English. Okay, I think that it is one of the most important for the every in Indian English speaker and the writers. Without knowing the proper tense, no one can no one can speak and write English properly. By the way, this topic, the tense pattern is the compulsory chapter for the first year art science commerce and the second year plus two first year and plus two second year art science commerce and the vocational. Not only for the these groups, this needs the each and every one of the English speaking world, because English is the universal language. It is the medium of instruction, it is the medium of communication, it is the everything nowadays. Okay, people are doing English, speaking English, writing English without knowing the proper form patterns. But just I want to guide each and everyone that this this pattern and this everything will be very helpful to you, because without knowing the proper English, without knowing the proper tense and forms, it will be meaningless and it will be incorrect. Okay, now come to the dear student, now come to the topics. Tense patterns. Tense is a grammatical concept which is the very important in any language, and without the proper tense, proper form of tense, proper pattern of tense, the English will not be accurate and grammatically incorrect. Okay, now come to the topic. Tense is one of the most important topics, and most of the people they thought that it is not very important. It is not very important in every way. But if you think that it is not important, you are wrong. It is very important. Okay. Uh, dear student, now come to the topic. आजिकार ए लाइव सेसन रे लाइव क्लास रे स्पेशली आम टेन्स उपर डिस्कसन करवा. टेन्स उपर देखो सेक्शन 1. नाउ कम टू द सेक्शन 1, and before that I want to idea some idea and want to say something about the tense. Tense is one of the most important topics. Tense is one of the most important grammatical concept which will be very useful, which will be very essential in the English speaking world. In English especially there are two type of tense. Before that, tense is a grammatical concept which is used in a particular language to make a language very effective, to make a language very sweet. We must have to use the tense. In English especially there are two type of tense, and the tense can be divided into two types. First one is your past tense, and second one is your present tense. Present and past tense is can be called as the tense in English, and the of the future is that is only a time, and tense denotes time and action. Tense denote time and action. Tense specially time our action upare indicates करे, denotes करे, so that we must have to know that. And tense always speak about the time and action, so that there are two type of tense in English, present and past tense, and there are three type of time in English. Especially तीन प्रकार टाइम अच्छी, present time, past times and future time. But there are only two type of tense, present tense and past tense. Present tense is a tense which is ongoing, or the work person is ongoing, running, or under process is known as the present tense. For example, Ram is going, Ram is eating, Ram is sleeping, and I am doing. So many, you can take so many examples.
and past tense is a tense which is ongoing, which is uh, gone away. A tense which is already completed, which is gone away, is called the work of a person, the action of a person is already completed, which is gone away, is known as the past tense. Ram is already Ram has Ram ate in Odia se ଖାଇଥିଲା se जोଇଥିଲା se ଶୋଇଥିଲା, like that. But in the present tense ମୁଁ ଯାଏ se ଶୁଏ se ଖାଏ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତି. In present tense ଶୁଏ ଏ ଛ ଛା ଛି ଛେ ଏଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଲାଗିଥାଏ. But in the past tense, at the end of the Odia sentence, you can find lo, la, li, le, li ଲାଗିଥିଲେ. You must have be confirmed that. But in the present tense, the the helping verb, the how recognize a present tense. Present tense को किपरि recognize करा जाई परिबो. First, M is R, V1, V verb pro first verb किंबा केवल verb थिबो, simple verb थिबो. M is R, have, has ଲାଗିଥିବ. Then it indicates the present tense. But in the past tense, V2 বা verb pro 2 number form, go, went, and then was, were, had ଏଭଳିଆ verb ଲାଗିଥିବ, V2 ଲାଗିଥିବ, and that indicates the past tense. Okay. And as per our daily use, as per our daily activities, daily use, the tense, the use of the tense can be divided into 4 categories, 4 types. First one is present. First one is the simple category or the common activities, common habitual category. And second one is the progressive, the continuous category. Third one is the perfect category. Fourth one is the perfect category. Some of the activities in the world, दुनिया रे जिते भी किसी भी एक्टिविटीज अच्छी, बहुत गुड़े एक्टिविटीज अच्छी जोटा कि कॉमनली समस्ते आमे करी चालू प्रत्येक दिन करू. द ऑल द कॉमन एक्टिविटीज लाइक स्लीपिंग, ईटिंग, बाथिंग, डूइंग समथिंग, all the activities that will be come under the simple category or indefinite category. And the work which is ongoing, जो कार्यटा कंटिन्यू रही थाए either in past or present, that work which is not completed, गोटे काम जोटा कि ऑलरेडी काम कंप्लीटेड हे न थाए, कंटिन्यूअस प्रोसेस रे थाए, चालू रही थाए, that type of activities can be called as the progressive. से भलिया एक्टिविटीज को प्रोग्रेसिव बोली कहा जाई परिबो. Okay. Then what and the third one is the perfect work of a person, either in the past tense or in the present tense. Present work is already completed by the person. The work is already completed by the persons. It's called as the perfect form. से भलिया ताको कोन कहा जाय परिबो, परफेक्ट रे अछि बोली हमें कहि परिबो. Okay. Now come to the fourth category. Fourth category कौन अच्छी डियर स्टूडेंट, परफेक्ट कम कंटिन्यूअस. किसी काम सरी जाइथिबो, परफेक्ट हो जाइथिबो, और किसी काम कंटिन्यूअस रे थिबो बा प्रोग्रेसिव रे थिबो. परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. Some of the work of a person partially and going to is some work is ongoing. किसी कामटा सरी जाइछि, किसी कामटा बाकी रही जाई अछि. तो से भलिया क्षेत्र रे कोन करा जाय परिबो, that is that will be that activities common of the perfect progressive बा perfect किछि हेछि, progressive किछि हेछि बोली हमें कहबा. Now come to the examples. हमें in this live sessions first हमें स्पेशली देखंतु प्रेजेंट सिंपल लख एरा टिके मु टिके चेंज कर दोछि. से भूल है एक्जाक्टली पॉइंट आसनु. आम स्पेशली इन लाइव क्लास रे आम ओवरऑली किछि टिके डिस्कशन करवा. बुझिपार आम ओवरऑली डिस्कशन करवा. कौन डिस्कशन करवा देखिनियो, स्पेशली देखिनियो the present simple and the present progressive.
क्यों एक्टिविटीज बा क्यों काम को आम प्रेजेंट सिंपल कहवा क्यों काम को आम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोली क्यों एक्टिविटीज को आम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोली कहवा वी मस्ट हैव टू नो दैट ओके आम से सब जानवर आवश्यक we can uh, use that in the writing or speaking. If we know the proper process of present simple, proper form, proper patterns, proper rules of simples or the present progressive or the present perfect or the present perfect continuous, then we can speak, then you can write, then we can use that English properly or accurately. Okay, dear student देखंतु तापर हमें एग्जांपल्स को जीवा कोन देछि देखंतु सेक्शन 1 रे कोन कहिछि look at the following sentence. Look at the following look following sentence. मुझे पतला कर दिए then the color गुटे मु चेंज कर दूची Satish, what are you doing? Satish, what are you doing? देखो तो এইটা को पढ़ी लियो Satish, what are you doing? Satish, देखो Satish, what are you doing? Satish कहूची what are you doing? तुम्हें कौन करू अच्छो सतीश का को कहूची मनीष को कहूची 2 नंबर सेंटेंस को देखिनी डियर स्टूडेंट मनीष को कहूची व्हाट आर यू डूइंग तुम्हें कौन करू अच्छो मनीष देन रिप्लाई आई एम राइटिंग अ लेटर टू माय फ्रेंड आई राइट टू हिम एवरी संडे से कौन कहिला डियर स्टूडेंट देखिनी कौन कहिला फास्ट एठी कहिछि what are you doing Satish is telling to Manish what are you doing तुम्हें कौन करू अच्छो तब Manish is replying Manish कौन रिप्लाई दउछि Manish रिप्लाई कौन दउछि डियर स्टूडेंट देखिनियो I am writing a letter to my friend I write to him every day I write to him every day देखिनियो दुईटा पढ़ला the work the Satish is telling that what are you doing तुम्हें कौन करू अच्छो तो मु आगर मु कहितली आगर मु अनेक गुडे प्रीवियस क्लास पे ही जाइतिला जे तुम्हें कौन करू अच्छो द वर्क से पचारि कौन पचारुछन्ते जे तुम्हें कौन करू अच्छो केते बेले करू अच्छो वर्तमान तुम कौन करू अच्छो Manish is replying I am writing a letter to my friend I am writing a letter to my friend मु मो बंधु को बा मो सांग को गोटे चिठी लिखुची बा पत्र लिखु अछि he is replying से कोन रिप्लाई कला तार कामटा ऑलरेडी एक्चुअली चालू अछि से तांको सांग पाखु को गोटे पत्र लिखु अछि तापर सेकंड सेंटेंस रे कोन कहि छि देखिनियो एई थारे एई सेंटेंस रे कोन कहि छि I write to him every Sunday I write to him every Sunday मु प्रत्येक संडे ताकू लिखे मु प्रत्येक संडे ताकू तो दीटा सेंटेंस रो कोन बुझियो डियर स्टूडेंट फर्स्ट सेंटेंस इज इन द वर्क ऑफ दैट पर्सन इज ongoing or in the progress under process ओके तो फर्स्ट सेंटेंस रे कोन बुझी होचे सेई सतीश जहाँ पचारि थिला तार आंसरटा से पाइछि मनीषर कामटा ongoing अछि फर्स्ट सेंटेंस रे the work of the Manish is ongoing in the second sentence the I write to him every day
this work is a common activities or the habitual activities प्रत्येक संडे से लेखे that means this activity this work of this Manish is a common activity से प्रत्येक दिन लेखे but there is simple साधारणतः से सब संडे रे प्रत्येक संडे रे से लेखे but first sentence कौन कहछि I am writing a letter to my friend प्रत्येक first sentence रे कौन अछि मो सांग को गोटे पत्र लेखु अछि बोली से कहछि बुझि पारथिबो तो फास्ट नाउ डिड यू गेट एनीथिंग किछि बुझि पारथिबो निहाती एथुरु जहा हम देखुछु प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट सिंपल किछि कार्य प्रेजेंट सिंपल रे घटे कॉमनली घटे बा कॉमन दैट कैन बी कॉल्ड एज कॉमन एक्टिविटीज एंड सम ऑफ द वर्क which is ongoing under process or running in present is called the present progressive तो ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା कॉमनली घटे बा जनरली सब दिन बा प्रत्येक दिन घटे that is called the present simple but that activity is come under the present simple okay and the work which is ongoing which is जो कार्यटा चालू रही है that is come under the present progressive सेटा present progressive फॉर्म रे आसे ओके बुझी पारथिबो निहाती चलो तो हम आगो को बढ़िबा तापरे हमें बी एग्जांपल बी को टिके भलो भाबरे बुझिबा पई चेष्टा करिबा बुझो टिके देन हमें आगो को बढ़िबा I don't understand why my barking at you this morning. I don't understand why my dog is I don't understand देखिए I don't understand why my dog is barking at you this time. मु बुझी पारुनी ओके why my dog is तार डॉग कथा कहा जाय डॉग इज बार्किंग एट यही समय रे मो कुकुरटा तुमको देखी कौन पाई भुकुछि मु बुझी पारु नाही व्हाट इज द रिप्लाई then the first sentence is telling something and the work of that person is ongoing সেই एक्टिविटी से एक्शनटा से तार कहिबार शैली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो अछि डॉग इज बार्किंग एट यू दिस टाइम भुकु अछि द से भुकिबा कामटा बा से पिलार भुकिबा से डॉग रो भुकिबा कामटा इज ऑनगोइंग बट कीप्स क्वाइट बट किंतु से यूजुअली कीप क्वाइट से किंतु सब बेले से शांत भाव रे थाए ही यूजुअली कीप्स क्वाइट से यूजुअली कीप्स क्वाइट तार अर्थ से साधारणतः बा जनरली बा साधारणतः से चुपचाप रहे द फर्स्ट एक्टिविटीज इज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ओके first sentence is the present progressive and the first one is the present progressive and the second sentence is the present कारण जो कार्यटा कॉमनली हुए कॉमनली करा जाए कॉमनली हुए बा साधारणतः प्रत्येक दिन घटे से भलिया कार्य को आम सिंपल एक्टिविटी जो कहवा आ जो कार्य ongoing रे थाए अंडर प्रोसेस रे थाए दैट वर्क विल बी कैन बी कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव से जो कार्य चालू रही थाए ongoing रे थाए से ताहा प्रोग्रेसिव बोली आमे बुझी तो निहाती बार एथि बेसी किछि डिफॉल्ट नाही देखो हम गोटे एक्टिविटीज आवर गोटे क्वेश्चन करबा तापर हम आगो को बढ़िबा एक्टिविटीज रो फर्स्ट हम देखि नबा द बॉय नेक्स्ट डोर डैश द प्लांट्स नाउ बट ही नॉर्मली डैश इट इन द इवनिंग तार अर्थ काना गोटे एक्टिविटीजटा कंटिन्यूअसली रहउची आ गोटे एक्टिविटीज कॉमनली एक्टिविटीज बा सिंपल रहउची देखो माय द बॉय नेक्स्ट डोर डैश द
plants now. Now যেহেতু ଦେଇଛି is watering হবা is water ଦେଇଛି watering continuous ରେ ହେବା ତାପରେ but he normally does it. normally ସେ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭିନିଂ ରେ କରେ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରେ ହେବା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ୱାନଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରେ ହେବ ତ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଇ ଯେତେ ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେବ ତୁମେ I request each and every student to do all the activities with the help of these examples. ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିକି ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତ ଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ କରିପାରିବ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ରହିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ରହିବ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ରହିବ ତାପରେ ଆମେ verb that not normally take the progressive form କିଛି verb ଅଛି ଯେଟାକି ନର୍ମାଲି କେବେ ବି ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ମରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଦ ପେୟାର୍ସ ତମେ ଏଇ ପେୟାରକୁ ଦେଖିନିଅ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପେୟାର୍ସକୁ ଦେଖ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଓକେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଦ ପେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବିଲୋ ଏରା ଦେଖିନିଅ I like fish I am liking fish ओके तो इना कौन कही verbs that do not normally take the progressive form किसी verb अच्छी किसी केस रे किसी verb गोटे किसी verb normally से केबे गोटे progressive form रे निये नहीं I like fish तापरे कौन अच्छी I am liking fish केबे हेले हुए नहीं and second B रे देखिनियो he feels very happy he is feeling the heat now एटा केते पॉसिबल तमे निहाती भाबरे देखिबो देखा परे बुझी परिबो the sugar taste sweets the sugar in the market is tasting less sweet than these days ए भलिया किछि भार पछि एग्जामिन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस ए सब देखिला परे किछि गुड बेसिक आइडिया आसीबो आउ कोन प्रकृत रे केते पॉसिबल ताहा निहाती भाबरे जानि परिबो ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन तापरे आमे प्रेजेंट कंटिन्यू सिंपल और कंटिन्यूअस एक्टिविटी सरी जाइए आमे वर्तमान आमे प्रेजेंट परफेक्ट खोजिबा तो प्रेजेंट परफेक्ट रे जे फॉर्म वेयर द एक्शन ऑफ ए पर्सन वेयर द वर्क ऑफ ए पर्सन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड गोटे व्यक्तिर काम प्रेजेंट परफेक्ट रे ऑलरेडी कंप्लीट हेई जाई थाए ओके फॉर एग्जांपल लिखिनियो देखिनियो यूनिट 2 का आम बर्तमान आसी जाइछु आउ टिके मु भल भाव टिके मार्क करूछि देखिनियो मार्क करूछि एग्जामिन द यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस ई सेंटेंस को देखि गिरी किछि एग्जामिन करो आ बुझिबा पई चेष्टा करो बोली क्वेश्चन ता कहूछि वेयर इज योर टीवी सेट आई डोंट सी इट कौन कहूँ द क्वेश्चन इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल रे अच्छी देख देखिनियो भल भाव बुझा चेष्टा कर वेयर इज योर टीवी सेट तुम टीवी सेट केउठी अच्छी आई डोंट सी मु देखि नहीं बी रिप्लाई दोछि आई हैव सोल्ड इट दैट मीन्स द वर्क ऑफ दैट बी द वर्क ऑफ द सेकंड पर्सन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड से 2 नंबर व्यक्तिर कामटा ऑलरेडी कंप्लीट हो सारी आई हैव सोल्ड इट मु ताहा बिक्री करी देई सारी अछि बुझी पारला तो दिस एक्टिविटीज दिस द वर्क ऑफ दिस पर्सन इज हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दिस सेंस तो ए व्यक्तिर ए कामटा एठी सरी जाई छी बुझी गला तो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट इज फॉर्म where the work of a person is already completed प्रेजेंट परफेक्ट गोटे फॉर्म जो फॉर्म रे जणकर जेकोसी व्यक्तिर कामटा ऑलरेडी कंप्लीट हेई जाई थाए
କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, କେବେ ହେଲେ ରନିଂରେ ନଥାଏ। ସେ କାମଟା ଅଲରେଡ଼ି ଫିନିଶ୍ ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଯାଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଓକେ। ତ डियर स्टूडेंट देखिए तापर आम नेक्स्ट आग को बढ़ा। तो गोटे एग्जांपल निहाती भाव में अन्य एग्जांपल मान भी कर तापर देख 2 नंबर एग्जांपल देछि कौन व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल्स देख लियो। व्हाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी, व्हाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी, तुम्हें कहीं एते खुशी देखा जाऊ अछ, तुम्हें एते खुशी कहीं देखा जाऊ अछ। कंटिन्यूअस पचारि द क्वेश्चन इन दिस the persons A is asking the questions in present continuous रे क्वेश्चन टा पचारि देखिए एटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्वेश्चन टा पचारि बट इन the reply the another person B is replying that I have just got a job, मोर जॉब टीए पाई अच्छी से मु खुशी रे अच्छी बा हैप्पी अच्छी, से जॉब पाई से बहुत खुशी रे अच्छी। दिस इज द रीजन। The work of this person B is has already completed, ये व्यक्तिर कामटा ऑलरेडी कंप्लीट हो सारी सो दैट ही इज इन हैप्पी मूड, से बहुत खुशी रे अच्छी। तो ये भलिया जो कार्यटा जो पर्सन जो कार्य ऑलरेडी कंप्लीट होता है पास्ट रे प्रेजेंट रे बा पास्ट रे से कार्य को परफेक्ट बोली आम कह जाई परिबो। तापर नेक्स्ट आम जीवा ये सब डियर स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट इच एंड एवरी स्टूडेंट टू समस्त तरफ रिक्वेस्ट समस्ते निजे निजे ये सब करें। पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल आस करने पूर्व आम देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जोटा कि किसी काम सरी जाइथिबो आ किसी काम बाकी रही जाइथिबो से भलिया एक्टिविटीज मध्य आम मु तुमको टास्क रे देई देवी। ओके देख एटा गोटे 5 year ago नाउ ए स्मॉल बॉय young man, one example has been provided गोटे दे 5 year ago now a small boy, it गोटे that you are the suddenly run into an old friend whom you have not met for the last 5 years, but he has changed to so much that you can hardly recognize him, तुम ताको चिन्ह भी पारि ना। describe the changes that have taken place, कौन सब चेंजेस देखिल सेटा सब देख। ए स्मॉल बॉय थिला बेले से किपरि थिला, स्मार्ट थिला, कॉन्फिडेंट थिला कि हैज हियर कौन थिला एटा निजे भी करि पारिबो। तबे देख सम ऑफ द वर्क which is completed either in the past and present and on some partial work is going to complete or on the process, किछि कामटा सरी जाइछि किछि काम सरी जाइछि। राम हैज बीन ईटिंग, श्याम हैज बीन कुकिंग, दे हैव बीन गोइंग टू सेंटेंस जे थिबो दैट विल बी कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नाउ कम तो पास्ट सिंपल, हम पास्ट सिंपल विषय किछि जानिबा। पास्ट सिंपल कौन लाइक द प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल इज a form, past simple is a form like your present simple, all the present simple's activities, all the works of the present simple that will be changed into the past simple in the past tense। past tense रे present tense रे जहाँ थाए present simple रे से सब activities से सब काम past tense रे past simple, past progressive, past continuous रे परिणत है। तो डियर स्टूडेंट तो ये निजे निजे प्राक्टिस कर सब कंप्लीट कर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल एका संगे ये तो ये सब एक्टिविटीजटा निजे निजे किसी करनियो ताहले तुम परफेक्टली जापर बोली मुझे आशा करुँची। तो एक्टिविटीज जहाँ भी देती ये सब निजे निजे नियो। और टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड विदाउट टेंस यू कैन नॉट राइट। फ्यूचर रेफरेंस भी अच्छी, फ्यूचर रेफरेंसटा भी आम
डिस्कसन करवा आज आम एत पढ़ा काली पुणी थे आम यही समय कंटिन्यू करवा तो आशा करे आज लाइव सेसन टी लाइव क्लास टी निहाती भाव समस्त को हेल्पफुल हो फ्यूचर रेफरेन्स मुझे कहि देखो डियर स्टूडेंट फ्यूचर को बहुत लोक मैंने बहुत जो मैंने कन्फर्म नहांती से मैंने फ्यूचर को टेंस कहते फ्यूचर इज नॉट ए टेंस फ्यूचर इज ओनली ए टाइम रेफरेंस फ्यूचर इज ओनली ए टाइम रेफरेंस it is not tense there is not any particular word to express the tense so that it's not a tense in English as per the some of the grammarians and experts subject expert it is clear that it is not a tense it is only a time okay and we take some of the we take help of the some helping verbs or some modal help of the some modal verbs and shall and will to express the or the express the future time the present progressive use for the future reference present progressive ta future reference re bele use हुए देखें one of the examples okay what are you doing tomorrow evening आज संध्यार तुम कौन कर कौन करने को जाऊछ कौन कर that is saying about the future time विषय कही तापर the second person is replying that I am going to the town hall आम आज आज मु टाउन हॉल को जावाई स्थिर कर जीवार अच्छी my friends are coming मोर सांग माने आसुछंती we putting up a show for the handicaps आम गोटे handicap मान गोटे शो टी रखी अच्छु we are also meeting the minister for some funds आम मिनिस्टर को भेटी किसी फंड्स कथबार्ता हेबु are you going somewhere tomorrow evening तुम्हें कौन जाऊछ कि तापरे ए रिप्लाई करूची yes I am going to the library I thought I could ask you to come along ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଉଛି ତ some words some helping verbs we need that helping verbs to express the future time okay future is not a tense it is a time reference future is only a time reference we take the help of shall will and some of the present progressive progressive used for the future reference ये सब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आउ सेल विल साहाଯ୍य नहीं आम फ्यूचर रेफरेन्स करी चलू तो ये अनेक गुड़ी एग्जांपल्स अच्छी मु तो जस्ट पिला को गाइड करने हिंट्स दे चली एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू द प्रेजेंट सिंपल इज ऑल्सो रेफरेंस प्रेजेंट सिंपल इज ऑल्सो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस फ्यूचर टाइम रेफरेंस प्रेजेंट सिंपल मध्य फ्यूचर टाइम रेफरेंस करो व्हेन डू आई गेट देयर ये भले देखो देखि नियो हैव यू ड्रॉन अप माय टूर प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट वीक यस पी कहूची यू लीव फॉर संबलपुर एट 7 AM ऑन मंडे तो ये भलिया प्रेजेंट सिंपल मध्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो पारिबो प्रेजेंट सिंपल मध्य यूज करिकि आमे फ्यूचर टाइम रेफरेंस करि पारिबा सो दैट जेहेतु फ्यूचर को एक्सप्रेस कला भली कौन सी पार्टिकुलर वर्ड बा इंग्लिश ना इट इज ओनली ए फ्यूचर टाइम रेफरेंस देखो फ्यूचर टाइम रेफरेंस विथ बी गोइंग टू आम बी गोइंग टू लगे कि फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करि पारुछु तो मु जस्ट हिंट्स दे दउछि स्टूडेंट मान रेस्पॉन्सिबिलिटी निजे निजे मध्य पढ़ी कि बुझिबा पई चेष्टा कर can also contact me or they can also WhatsApp me okay be going to लगे कि जेमती करा जाई फ्यूचर टाइम रेफरेंस मध्य करा जाई पारिबो okay then the revision of tense okay or the discussion of tense is over tense is one of the most important topics जे माने भी tense को important दो नांती they will be face difficulties in their writing and speaking जे माने ई सब गुरुत्व दो ना okay it will be very difficult for you तुम मान को समस्त को difficult है जब you must have to revise tense accordingly time to time and do the translation on daily basis daily प्रत्येक दिन समस्ते 5-5टा 10-10टा ट्रांसलेशन कंटिन्यू कर ताहेले ही तमर इंग्लिश स्ट्रांग आसे हबो you can write in English read everything and express everything properly unless you are not
going to do good in English. ବୁଝିପାର ତ ଇଂଲିଶକୁ ନେଗଲେକ୍ଟ ନ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି କରିବାର ଅଛି you must have to revise the tense group everything and unless you are not going to do good. ତ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରି କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ନିହାତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେନ୍ସ ଉପରେ ନିଜର କିଛି ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିଛି. I like to request each and everyone, please do subscribe, share and give some comments to encourage me, and watch all the classes, all the videos regarding the first year and second year to arts, science, commerce in the subject English. तो आशा करे आज लाइव क्लासटी समस्त छात्र छात्री मान निहाती भाव हेल्पफुल होइथिबो. जदि क्लासेसटी हेल्पफुल होइछि क्लास को निहाती भाव लाइक करंतु, निजर सांगसाथी मानक सेयार करंतु, सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबाइ दियंतु एवं एमती कंटिन्यूअसली मो क्लासेस को अटेंड करी मत एनकरेज करबा सहित क्लासेस को देखु तांतु. ओके, so thank you for watching. See you in the next class. Thank you everyone.